वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका कोई भी सवाल शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिए, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। निफ्टी करीबन 100 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है और कौन से शेयर है जिन पे आपको रखनी होगी नज़र, और अगर आप किसी शेयर में फंसे हुए हैं या फिर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस कार्यक्रम में इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल शेयर कर सकते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर तीर्थंकर दास, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट, रिटेल, आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। वेरी गुड आफ्टरनून तीर्थंकर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Yeah, thank you for inviting me. And wish you a very happy new year, Tirthankar. Same to you and to your viewers as well. थैंक यू सो मच। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के। तीर्थंकर, फर्स्ट जो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको आज देखने को मिल रही है बाजार में, विद निफ्टी सेंसेक्स अंडर प्रेशर, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। व्हाट इज योर व्यू ऑन द निफ्टी ब्रॉड लेवल्स, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में? एक्चुअली अगर आप हिस्टोरिकली डेटा अगर थोड़ा देखेंगे तो आई मीन on a historical basis in the last 24 years, I mean the index hasn't I mean it has witnessed a top out situation in the month of January and February, excepting for 3 such occasion where it has stopped in March. So that's the reason why I'm a little skeptical in the market right now, and थोड़ा बहुत अभी अपना पोर्टफोलियो से कैश हाथ पे रहना शायद बेहतर रहेगा। आई वुड रादर sit on cash from 25% of my portfolio and wait for a dip in the market, क्योंकि अभी अगर टेक्निकली अगर लेवल देखा जाए तो 21,500 is a very important support level for the market. अगर 21,500 अगर आता है तो selling pressure in the market would intensify further from here onward towards the level of 20,800 as well. So थोड़ा बहुत cautious अभी यहाँ पे रहना चाहिए। There are chances that it can give a pullback, but historically in the month of January for the last few years it has given a negative return. So that's the reason why I'm a little cautious. और इसके बाद भी अगर देखोगे तो आपका from 11th January onward आपका result season भी शुरू होने वाला है, and the budget and the elections, this all cues are going to play might play and negative into the market. At the best, market might consolidate amidst the broader range of 21,500 to 22,000 के भीतर range में move कर सकता है, and if it breaks 21,500 then 20,800 can be a possibility. जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। नए साल में निवेशक जो है वो बहुत सवाल लेके आए हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल जो आया है यूट्यूब के जरिए, पहले उसे ले लेते हैं। गोपाल कुमार जी का सवाल है, उनका 2 स्टॉक्स पे सवाल है, एक है रैडिको खैतान और अडानी टोटल गैस। दोनों ही पे आपका व्यू मांग रहे हैं, रैडिको खैतान एंड अडानी टोटल गैस। या अगर आप रैडिको खैतान में अगर देखोगे तो टेक्निकली दे आर साइंस are projecting that there are, I mean, exhaustion in prices can be seen from the present price structure. It has been facing resistance around the level of 17,025 के करीबन resistance ले रहा है, तो there are chances कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है करीबन towards the level of 1,600 से 1,575 के करीबन अगर आता है, and if it able to sustain above that particular level then definitely वहां से एक वैल्यू बाइंग आ सकता है, बट कंडीशन बीइंग कि निफ्टी is able to sustain above the 21,500 level. If the index breaches the 21,500 level, then further correction in the stock can be seen. I mean, it can go percolate further down towards the level of 1,500 as well. So again, I am suggesting to be cautious in this at this current juncture. So Radico was the first stock, and what was the other stock that you said? It was Adani Total Gas. Okay. Currently, it's trading around 1,004 levels.
I think it's coded as ATGL. Did you get the stock? No, I don't think I'm able Okay, to find let's the. leave it. Let's start with the HDFC Bank. Anmol has a question on HDFC Bank. उनका मानना है कि HDFC Bank में उन्होंने एवरेज प्राइस यानी कि 1647 के आसपास उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं 50 शेयर्स. सो ही वांट्स टू नो कि अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, मुनाफा वसूल लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए. Uh, I mean, that particular client hasn't mentioned about he is a long-term investor or a trader. I mean, if he is a trader, then definitely this is the right time to book the profit right now. Okay. ठीक है. And if he is a long-term investor, then definitely जो price पे उन्होंने entry किया है, that's a very interesting price. वहाँ पे टेक्निकली कंसोलिडेशन किया था, वहाँ से वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी है, सो डेफिनेटली नो नीड टू वरी जिस प्राइस पे उन्होंने लिया है. रादर अगर 21,500 अगर सस्टेन कर जाता है तो देन अपसाइड टारगेट कैन बी अराउंड द लेवल ऑफ 1720 to 1735 इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 6 months और 9 months पर्सपेक्टिव में वो टारगेट आने का संभावना है. अगेन अगर यहाँ से अगर मार्केट रैली देता है तो द सम ऑफ द सेक्टर्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज द बैंकिंग. बैंकिंग इज वन ऑफ देम. सो डेफिनेटली अगर प्राइवेट बैंक प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो HDFC बैंक एंड ICICI बैंक आर द टॉप पिक्स अमंग देम. प्रेजेंट चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द HDFC बैंक इज अ बेटर पिक अमंग द टू. सो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत अगर नजरिया उनका थोड़ा लंबा है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना जायज रहेगा. शेफाली का सवाल है ऑन BHEL. शी सेज दैट शी हैज 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 111 और आज जो स्टॉक है वो 203 के आसपास कामकाज कर रहा है. क्या उसे मुनाफा वसूल लेना चाहिए इन लेवल्स पे? I mean, it has already given a one-time return. It's a Right. 100 के price पे उन्होंने buy किया है. So congratulations to him the picking at such a low prices. So definitely again I would suggest कि another theme जो 2024 में play करने वाला है तो that would be that would be in the infrastructure and the construction business जैसे LT बोलो, भेल बोलो, these are the stocks to be picked up in 2024. So भेल definitely अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, 205 का रेजिस्टेंस लेवल है. So तो again I would say कि book 25% of the particular stock. अगर उनके पास 100 शेयर है तो 25 शेयर्स बुक कर लीजिए और बाकी ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस. और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो no need to worry in this particular stock. In the longer term picture, I won't be surprised if this stock gives, gives a 300. I mean, three times return उनके लिए आने का संभावना है. So upside target can be 300 to 320 in the longer term picture. So that's what my view is. Okay. चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यूट्यूब के जरिए से आए हैं उन्हें ले लेते हैं. अशना यादव का सवाल है, सर कैन आई पुट 50,000 रुपीज इन PSU शेयर्स एंड होल्ड टिल 2024 इलेक्शंस? देखिए, अगर इवेंट के ऊपर अगर आप अपना पोर्टफोलियो जज करना चाहोगे तो दैट वुड बी अ wrong approach to be into the market. I mean, event cannot be predicted कि who is going to come into the government in 2024. तो उसके बेसिस पे लेना नहीं चाहिए. तो डेफिनेटली PSU हैज बीन इन फेवर इन 2023 और इस बार भी यहाँ पे आपका मोमेंटम गेन करना चाहिए. तो amongst that, I think Hindustan Aeronautic is one stock that I would recommend to hold into the stock, but not on the basis of on the event, but solely on the basis of the technical chart pattern that it has been developing for the past few years. So that's what my pick is on the PSU sector. रमेश सिंह जी का सवाल आया है, ABFRL में वो निवेशित है, टारगेट जाना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म.
हाँ, यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है. डेफिनेटली इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट अबव द 250 का लेवल. प्रेजेंट चार्ट स्ट्रक्चर या वॉल्यूम पैटर्न जो भी बोलो, यहाँ पे इट आर इंडिकेटिंग दैट इट इज मोस्ट लाइकली टू गिव अ ब्रेकआउट अबव द 250 लेवल. सो डेफिनेटली थोड़ा अगर थोड़ा अगर I mean, if it can increase his trading perspective to at least 1 month or maybe 2 months, then that would be a better approach. क्योंकि upside target can be around the level of 280 for this ओके stock. ओके। किरण के सवाल आया है। किरण के दो सवाल है। उन्होंने एक टाटा टेक्नोलॉजी पे पूछा है। आप टेक्निकल देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इतने चार्ट हिस्ट्री है इसकी, बिकॉज इट्स अ न्यू लिस्टिंग, बट इफ़ यू वांट टू कमेंट, सो शी वांट्स टू बाय टाटा टेक्नोलॉजी। शी इज़ आस्किंग कि क्या उसको करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए, और दूसरा उनका सवाल है एसबीआई कार्ड्स को लेके, क्या उनको इन लेवल्स के आसपास एसबीआई कार्ड को ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? Well, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एसबीआई कार्ड. इट्स कंसोलिडेटेड अराउंड द लेवल ऑफ 770 750 के करीबन. लगभग आपका 1 year 1.5 year से इसी लेवल को सस्टेन कर रहा है, which is a good sign for the time being. But there hardly any signs of a volume concentration are being seen as of yet. So this is definitely a good pick in the longer term picture, but immediate term it has to give. I mean, there has to be some amount of volume concentration, some kind of a indication यहाँ पे आना चाहिए जिसके कह सकते हैं कि यहाँ से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है. ओके। सो दैट्स द रीजन आई वुड सजेस्ट कि बाय ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो करना चाहिए. दैट इज if this particular stock trades above the level of 810, तब उसमें अगर एंट्री ले तो शायद बेहतर रहेगा. That would be safer entry into that particular stock. And the other thing that you asked about is the Tata technology, and you rightly pointed out that I have been looking the technical part, and I won't be able to comment on this particular stock. जी। But as far I know, our fundamental team has been suggesting that this is not the right time to buy this particular stock because it has discounted the price of 2024. Forward earning of 2024. So राइट। that's the reason why we are not that bullish at this particular price. एक सवाल आए हैं, नाम नहीं लिखा है उन्होंने। विप्रो स्टॉक को होल्ड रखा है उन्होंने एट द रेट ऑफ 430, सो ही जस्ट वांट्स टू नो कि क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस है 430 में. एंड इफ यू सी अदर पैक इन दिस सेक्टर आईटी स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द स्टॉक हैज रैलीड एंड विप्रो इज द वन व्हिच हैज अंडर परफॉर्म for the past few months. So definitely this is on the verge of giving a rally in the next few months. And if everything goes well, that is if the index is able to trade above the 21,500 level, then definitely this is one stock that would outperform the rest in the lot. And upside target can be around 550. Definitely hold का ही सलाह रहेगा. और 550 का टारगेट शायद नेक्स्ट 6 मंथ्स में देख सकते हैं. लेकिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है. सो डेफिनेटली वहाँ पे एक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए. दैट्स द रीजन आई एम सजेस्टिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ आपका जो बाई प्राइस है दैट इज 430 का शायद बाई प्राइस है. तो वहीं पे आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे डाल के कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. इन्हीं का एक और सवाल है ऑन एनएमडीसी। एनएमडीसी स्टॉक होल्ड रखा है 120 लेवल का, यानी कि 120 इनका बाइंग प्राइस है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, अगर टेक्निकल पैटर्न में बोल अगर जाए तो ये 120 में उसका ब्रेकआउट लेवल था. आई थिंक दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन फॉलोइंग द टेक्निकल चार्ट्स. दैट्स रीजन ही हैज एंटर्ड एट 120 लेवल. ओके। वेरी गुड एंट्री लेवल है. 120 इज एन एक्सेप्शनली गुड प्राइस टू एंटर. और लेकिन ऑन टेक्निकल पार्लेंस द टारगेट हैज बीन अचीव. द टारगेट वाज अराउंड द लेवल ऑफ 200. अभी जो यहाँ पे जो रैली दे रहा है दैट इज एन एक्सटेंडेड रैली which can be a little dicey for the time being. Okay, so for the time being, market में थोड़ा diciness है अभी. अभी that's the reason why again वो suggest कि book 25% of this particular stock and hold the rest. ओके। बंटी का सवाल है, सर व्हाट इज द
Which is your favorite banking stock and the buying price, and also your favorite auto stock? Uh, well, uh, Well, definitely. I mean, it would be unfair to pick one stock from the banking lot. There are a lot many stocks in the PSU segment which are very attractive, even at that this particular price as well. Like PNB है, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर जी. बैंक ऑफ इंडिया है. These are some of the stocks in the PSU segment which I like at present juncture. और यहाँ से भी इसका रैली और स्टीम अभी भी बाकी है. मे बी 10 to 15% रैली अभी भी बाकी है. आई फील कि बैंकिंग सेक्टर्स में अभी तक रैली दिया नहीं है. आई मीन द रैली विच वी हैव सीन इन 2023 was just an eye wash. I mean, the more rally are yet to come in this particular sector, and PSU banks are the one that definitely one need to have in one's portfolio. So definitely, अगर banking sector में अगर कुछ pick करना है तो PNB, Bank of India are the better ones, and on the private space, ICICI Bank I think is could be a better pick on the lot. और आपने Auto stock. ऑटो स्टॉक्स में आपने पूछा था तो डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट बीइंग द टीवीएस मोटर. और सो डेफिनेट काफी एक्सटेंडेड है इसका रैली. प्राइसेस हैज एक्सटेंडेड. आई मीन 1400 से 2000. आई मीन फ्रॉम 1400 लेवल इट वाज एट एन ओवरबॉट सिचुएशन, बट देन आल्सो इट हैज रैलीड. सो थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक नीड टू बी हंटेड एट लोअर लेवल. यहीं पे आपका ट्रेडिंग का स्किल्स दिखाना जरूरी पड़ेगा. दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 1875 अगर प्राइसेस मिलता है तो दैट वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड अमंग्स द लॉट आई थिंक टीवीएस इज द बेटर पिक. ओके. राजीव सनवाल जी का सवाल आया है. उनका दो स्टॉक्स पे सवाल है. एक है सिगाची इंडस्ट्रीज. उन्होंने खरीदा है ये 32 रुपीज़ पे. होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं. और थिरुमलाई केमिकल उन्होंने खरीदा है 225 पे 225 पे. वहाँ पे भी ये होल्ड करें या प्रॉफिट निकाल लें. पहला स्टॉक आपने बताया था दैट इज द सिगाची. सो सिगाची अगर आज का प्राइस पैटर्न अगर देखोगे तो इट हैज गिवन अ रैली ऑफ 12% इन अ सिंगल डे एंड विद अ एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम. आई मीन इट हैज क्रॉस्ड द वॉल्यूम ऑफ द पास्ट 2 to 3 months. So definitely a larger participation are in this particular stock. So अगर आपका entry price अगर lower prices पे है, that is around the level of 55 पे अगर entry है तो definitely a good buy. थोड़ा और rally देने का expectation है, that is around the level of 63 जाने का संभावना है. Okay. But this is but again, market conditions are not that suitable right now. So Right. definitely थोड़ा बहुत cautious रहना पड़ेगा और tactical buy होना चाहिए. 63 में book कर लेना चाहिए. I mean, he has already bought it at rupees 32. So he's sitting on good profits. Oh. So definitely there is a lot more rally left into the market, and higher target of 63 can be seen in the immediate term. And it presently trading at new price territory. So higher target can also be seen, but 63 seems to be the feasible target for the time being. और इनका दूसरा सवाल थिरुमलाई केमिकल पे है. थिरुमलाई केमिकल he has bought at 225. Just give me a second. Yeah, again a very interesting chart pattern है यहाँ पे. On technical parlance इसे कहा जाता है कि rounding formation is on the making stage. So definitely इसका price confirmation होगा. I mean that bullish pattern need to be confirmed if this particular stock trades above the level of 245. 245 अगर तोड़ देता है तो definitely is a bullish पैटर्न वहाँ पे देख सकता है. और वहाँ से आपका रैली
करीबन 280 तक भी दिख सकता है, और वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी है, जिससे दैट डिनोट्स की लार्जर प्लेयर्स आर गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस पे उन्होंने एंट्री किया है. जी. Let's hope it breaches the 245 level, and if it does so, then 280 to 285 can be the immediate target for this stock. नंदलाल जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास आवास फाइनेंस के 10 शेयर है एट द रेट ऑफ 2280. मैं मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? मेरा 2 साल का नजरिया है. आवास फाइनेंस 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2280 रुपीज पर शेयर. It's 1568 current level. Well, it hasn't given any kind of a confirmation as of yet कि ये bottomed out हो गया है कि नहीं है. Okay. But definitely अच्छा support level है, around the level of 1200 के करीबन आपका, I mean 1400 के करीबन अच्छा सपोर्ट लेवल है. Okay. एक डबल बॉटम की तरह बना है. सो अगेन दिस कैन बी अ टैक्टिकल बाय. डेफिनेटली अगर 1800 के ऊपर अगर जाता है तो फिर इसे कहा जाता है कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल हुआ है. अदर देन दैट अभी भी ये ट्रेडिंग बेट हो सकता है. थोड़ा बहुत वॉल्यूम कंसंट्रेशन है. Definitely a trading bet हो सकता है with an immediate target of 1800, but other than that still there is no confirmation कि it has bottomed out in this particular stock. Okay. श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है, सर, is it the right time to buy Steel Authority of India and Indian Energy Exchange, I think IEX, at current market price? Will it be good to hold this investment for 2024? Yes, IEX is something which I would bet on in 2024 as well. और कंजेशन जोन के बाहर निकला है फॉर द पास्ट फ्यू आई मीन मंथ्स से. वो कंजेशन जोन पे था. 165 वाज द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल. अगेन इट इज crawling back to this particular resistance, I mean congestion zone. अगर ये 165 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली अच्छा बेट रहेगा 2024 में. अपसाइड टारगेट कैन बी 200 to 220. आई एम वेरी मच bullish in this particular stock. So definitely one stock that need to have in one's portfolio. और सेल के बारे में आपने जो बताया, so थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइवर्जेंस है प्राइसेस में. So this is not the right time to enter in this particular stock. But even though there is momentum in this stock, but it would be a very risky bet to enter in this particular stock at this current juncture. So I would rather wait for a dip around the level of 115. वहाँ पे शायद सेफ बेट रहेगा एंट्री के लिए. Okay. अमरीश का सवाल है, he has ICICI Prudential shares. He has 500 shares at the rate of 551. He wants to know कि वो उसको होल्ड रखना चाहिए स्टॉक को या फिर अब लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए. Well, I wouldn't suggest to book loss in this particular stock. It has given a handsome return to the investor in the longer term perspective. And हाँ, यहाँ पे अभी आप अगर देखोगे तो for the past 2 साल में थोड़ा बहुत कंजेशन था. यहाँ पे रिट्रेस भी किया है, करीबन 400 से लेके 600 तक गया था. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया है. प्रेजेंट चार्ट पैटर्न जो दिखा रहा है, दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट. दैट इज 550 का लेवल अगर तोड़ता है तो देन यू कैन सी अ स्पॉट इन प्राइस एक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो अगेन अ वेरी रिस्की बेट. अभी उनका एंट्री हो गया है. सो लेट्स टेक अ रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड वेट एंड होप कि इट ब्रीचेस दैट 550 का लेवल. अगर 550 के ऊपर अगर ये सेशन कर जाता है, दैट कैन बी I mean in the near term a target can be around the 600 to 625 can be the minimum target for this particular stock. So again a very risky bet. So wait for it कि it breaches the 550 level. Okay. एक और सवाल है, मैं नाम नहीं लिखा है. अभी के टाइम पर IRFC के शेयर खरीद सकते हैं क्या? I mean, can we buy IRFC shares at current market price? Well, one can buy in this particular stock, but again a very risky bet. काफी overbought है.
डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है इन द प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेटर्स. सो दैट्स रीजन व्हाई इफ आई being a safe investor, for the safe investor this is not the right time to enter. Okay. And for an adventurous trader, definitely one can buy in this particular stock. There is further rally left in this particular stock. For me, perfect entry point would be around the level of 88 to 89. That would be a safer entry point for me. ओके. नीतीश का भी सवाल IRFC पे ही है. उनके पास 100 शेयर्स है बाय. तो आप उनको क्या सलाह देंगे? बिकॉज इट्स नियर हिज बाइंग प्राइस ओनली, सो ही शुड होल्ड. वेल डेफिनेटली होल्ड कीजिए. अगर उनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए. दिस आर द स्टॉक दैट नीड टू बी हैव इन वंस पोर्टफोलियो. अगर यहाँ से अगर मार्केट 5 से 10% का भी अगर करेक्शन देता है तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक इट वुड दिस पर्टिकुलर स्टॉक वुड gonna करेक्ट मोर देन 5 to 6%. तो अब मार्केट में उतना वॉलेटिलिटी आपको absorb करना पड़ेगा. I mean, one needed get shocked off by a mere correction of 5 to 6%. So अभी इतना प्राइस एंट्री हुआ है. So no need to worry if your perspective is on a longer term perspective. One need to average this stock around the level of 88 to 86 के लेवल पे अगर एवरेज करते हैं तो अगेन उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. जी, लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन. विकास गुप्ता का सवाल है. क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे उनके पास 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 297 ईच. वो जानना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करे. Definitely not. This is a very good entry for this particular stock, or this particular space has. I mean, the sector has been showing some kind of a momentum for the past few days. अभी market थोड़ा weakness दिखा रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत consolidation दिखा रहा है. But I believe this particular stock is going to give an exceptional return. फिलहाल तो नीचे का लेवल पे अगर 300 भी अगर सपोर्ट लेता है तो that would be a better entry point. And if that particular person is holding, then wait for a target of around the level of 350 to 360 का टारगेट इस स्टॉक में देख सकता है इन द नियर टर्म. तीर्थंकर, आपके लिस्ट पे कौन से शेयर है? Well, I am playing on certain sectors as a bet. जैसे अगर आप अभी देखो तो pharma is definitely is in momentum right now, and another being the FMCG stock. And FMCG stock, as you know, before the आप ब्रिटानिया टाटा कंज्यूमर अगर मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो टाटा कंज्यूमर कैन बी अ वेरी वेरी गुड बेट इन द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. और एफएमसीजी में अगर आप आई मीन इन द फार्मा स्पेस अगर आप लेना चाहो तो ऑरो फार्मा कैन बी अ बेटर पिक. सो दिस आर द टू पिक्स फॉर मी. ऑरो फार्मा एंड टाटा कंज्यूमर कैन गिव अ डिसेंट रिटर्न इन 2024. जी, तीर्थंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. तो इस प्रोग्राम को आज यही समाप्त करते हैं. और लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे. आप अपने सवाल भेज सकते हैं. अगर आज आपका सवाल नहीं ले पाए हम, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप सवाल भेजते रहिए, उसे हम कल अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे. तो अभी के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस.